Hey guys, Rom Guruji here, back with another video, and one of the biggest questions asked by so many people on hashtag Ask Rom Guruji has been answered directly by Iqoo. What am I talking about? What am I talking about? I'm talking about the new Android 11. Can you see any changes? No. There are changes, but they are not visible. Yet again, in the most IQ fashion, Android 11 is here. As you can see, this is Android 11. So my IQ 3 is running Android 11 right now. Android 11 is here, but there are no visual changes except for maybe the iManager app and some animations. So does that mean it's useless? No, it's not. It's genuinely one of the best updates I've received on my IQ 3 in a long time. And I'll tell you why. So basically, wait, आपको ये वीडियो हिंदी में देखना है तो नीचे दिए गए टाइम स्टैम्प पे जाके आप ये वीडियो हिंदी में भी देख सकते हैं. So talking about my IQ 3, right? Well, this is one of the best updates I've received in a long time, and there is a very simple reason for it, right? The very simple reason for it is the performance has improved so much. And you might be thinking, am I overstating? No. Android 11 has done nothing when it comes to aesthetic appeal. Nothing, right? Genuinely nothing visually has changed except for maybe iManager app, which I think is fine. It looks cool, but that's it. And the animations. But the animation is where this update shines. Why? For a very simple reason, this makes your experience better. I just did a video, I remember. It's in the I button. It's when I switched to OnePlus 60, it was a custom ROM, the animations were better, so the experience was better. Iqoo maybe watched that video, maybe did not, but the Android 11 update has improved the performance so much. See, performance was already there, it has the raw power. What this has improved is it has made the UI buttery smooth. And I am not kidding, the UI is absolute butter. Now, a lot of users might be wondering, I haven't received this update. So, Iqoo conducted something known as an Iqoo Connect a few days back, and there you had to register to get the Android 11 update early. So, this is the Android 11 update early, but now you know what is coming for you because, well, Rom Guruji registered for that Android 11 update, yes. And so yeah, there are no visual changes, but battery has improved genuinely from what time I've used. And you know, I've not used for a long time, but you could spot that the battery was draining earlier, but now it's not. Moreover, the experience has improved so much, but I still have some tricks for you to improve the experience. By the way, if you're liking the video till now, please press the subscribe button. It helps us a lot to bring more videos to you, right? And well, what are the tricks? Go to developer options, right? And make every animation 0.5x. Change the width, the screen width that actually changes how much content is displayed in your screen to 400. You will thank me later. Trust me, it changes your experience so much. The phone feels even more buttery smooth. Do that, it's awesome, and it does not break anything in your phone. And another thing that I did forget to mention, I guess, is you do have chat bubbles, but they're not working as smoothly as I would want them to. That's fine. What is not there is adaptive notifications, so you're not going to get those categories of notifications which Android 11 basically has. There is no Funtouch OS 11 changes here. You cannot even see even a bit of it, so don't even try to look for it. It's not there. No specifically new visual features, no visual changes. It's just animation, smoothness, and performance. That's it. That's what it has brought. But this will make your experience so much better because Android 11 just smoothens out everything. By the way, if you have questions, and a lot of users have had questions, so you might have similar questions, Ask Rom Guruji episode is coming today. As soon as it releases, it will be there in the I button, so go check for it. And obviously in the description, yes. Now we are going to switch to Hindi to tell you more about this update. By the way, no camera changes, nothing of that sort, just what I've told you, right? Okay, moving to Hindi. कैसे हो गाइस, एंड्रॉइड 11 अपडेट आ चुका है. काफ़ी लोग इसके लिए वेट कर रहे थे. मतलब ये तो मतलब इसके लिए अब मैं तेरा एडिट बनाने टाइप की मतलब जोश आ गया था लोगों में कि भाई कर दो, कोई एंड्रॉइड 11 पे अपडेट कर दो हमें. कर दिया, आईकू ने सुन लिया, कर दिया. विजुअली कुछ चेंज नहीं हुआ है, कोई नए थीम नहीं आया है, कोई नया लुक नहीं आया है. इनफैक्ट एंड्रॉइड 11 वाला जो नोटिफिकेशन स्टाइल है वो भी नहीं आया है, बट बहुत चीज़ें
जो आई है वो अंडर द हुड आई है, आपको दिखेगा नहीं बट आपका एक्सपीरियंस इंप्रूव होगा, जो मेरे हिसाब से एक अच्छी चीज़ है। ठीक है, एंड्रॉयड 11 में उन्होंने कुछ नए चेंजेस आने चाहिए थे, बट यार कम ऑन, इन्होंने कुछ तो किया है जो मेरे हिसाब से काफ़ी बढ़िया है। परफॉर्मेंस वाइज बहुत इंप्रूव हुआ है, एनिमेशन के एक दो नए वो फिंगरप्रिंट एनिमेशन की एक दो नई चीज़ें आई है, वो सब आई है, बहुत कम मैटर करता है, लोग इतना यूज़ भी नहीं करते हैं। बट जो चीज़ें में इंप्रूव हुई वो आपको बता दूँ, एक तो है परफॉर्मेंस बहुत इंप्रूव हुआ है, इन्होंने आई मैनेजर चेंज किया है, एनिमेशन चेंज किए हैं जो अच्छा है, बट जो परफॉर्मेंस है वो इंप्रूव हुआ है, एक्सपीरियंस है वो इंप्रूव हुआ है। मैंने अभी एक वीडियो किया था, आई बटन में दिखेगा आपको, OnePlus 6T में मैंने स्विच किया था, मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी बढ़िया था। सेम चीज़ अभी मुझे पता चल रही है कि एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा हो चुका है, फ़ोन जल्दी अनलॉक होता है, ऐप जल्दी स्विच होते हैं, आपको कोई टेंशन नहीं आती, ऐप स्विचिंग बिल्कुल लैगी नहीं है अब। तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी चीज़। देखो मुझे अभी कितने मुझे ये आ रहे हैं, देखो नोटिफिकेशंस आ रहे हैं यार, क्या करें। और जिनको लग रहा है एक्चुअल अपडेट नहीं है, ये देखो एंड्रॉयड 11 का अपडेट यहाँ है। तो हाँ, तो नोटिफिकेशंस अच्छे से आ रहे हैं, कोई इसमें टेंशन नहीं है। जैसे पहले हो रहा था कि नोटिफिकेशंस नहीं आ रहे हैं या सडनली आपके व्हाट्सएप के नोटिफिकेशन काफ़ी देर पे आते हैं, वैसा कुछ नहीं है, सब टाइम पे आ रहा है। इनफैक्ट ऐप स्विचिंग, ऐप में जाना बाहर आना बहुत ही अच्छा इंप्रूव हो गया है, एनिमेशन बहुत बढ़िया इंप्रूव हो गए हैं। ठीक है, इसमें वो चैट बबल्स भी आए हैं, बट वो जितना मैं चाहूँ उतना बेटर काम नहीं कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये तो बहुत सही है, बस नहीं होता रोम गुरुजी के साथ, क्योंकि मेरे पास कुछ टिप्स और ट्रिक्स है जो आपका एक्सपीरियंस और इम्प्रूव कर सकती हैं। पर अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो, या सब्सक्राइब बटन दबा दो, हमारी काफ़ी मदद हो जाती है उससे, है ना, आपके लिए नए वीडियोस लाने में। तो जो टिप्स और ट्रिक्स बता रहा हूँ, बेसिकली करना है, डेवलपर ऑप्शन में जाना है, ठीक है, और कुछ चीज़ें करनी है। पहले तो जो एनिमेशन है, सारे एनिमेशन को 0.5x कर दो, बहुत ही बढ़िया इंप्रूवमेंट लगेगी आपको, एक चेंज लगेगा आपके। और जो विड्थ होती है ना नीचे, वो स्क्रीन में आता है विड्थ वाला ऑप्शन, उसमें 400 कर दो, तो बहुत सारा कंटेंट भी आपकी स्क्रीन में आएगा, बहुत बटरी स्मूथ एक्सपीरियंस हो जाएगा। ट्रस्ट में बहुत बढ़िया हो गया है। अब आप सोच रहे होंगे क्या, देखो यूआई तो नहीं चेंज हुआ है, प्लस ये अपडेट सबके लिए नहीं आए, ये सिर्फ जिन्होंने iQOO कनेक्ट में पहले रजिस्टर किया था उनके लिए अर्ली एंड्रॉइड 11 अपडेट है। तो ऑब्वियसली रोम गुरुजी ने कर लिया, पर आपको अब पता चल गया है कि क्या आने वाला है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ठीक है, विजुअल चेंजेस नहीं हुए हैं, मैं समझता हूँ, बट जो परफॉर्मेंस और एक्सपीरियंस है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुआ है। ऑब्वियसली आपको कोई और क्वेश्चन है जो बाकी यूजर्स से मैच करते हैं, #AskRomGuruji का एपिसोड आज आ रहा है, तो जाओ यार देखो, जरा #AskRomGuruji देखो। आज के एपिसोड के लिए इतना ही था। एंड्रॉइड 11 अपडेट आ चुका है, बाकी मेरे वीडियोस के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। आई होप आपको पसंद आया, वो वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, और आपको अगले वाले में मिलते हैं। चलो बाय।